औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद नायाब रज़ा बुखारी। और आज हम जो लेक्चर आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000। WHO एंड यूनिसेफ जो है अरेंज कॉन्फ्रेंस एट द Almata in the September 1978. 134 government attended it. During the conference, it was declared that the health status of the millions of people developed world in the unacceptable and the more than half population has the known access of proper health care. उसमें ये चीज़ें डिस्कस की गई कि इसमें से तकरीबन जो है वो हाफ पॉपुलेशन जो है वो हेल्थ केयर को प्रॉपरली असेस नहीं कर रही और कुछ जो है उसको अनएक्सपेक्टेबल जो है वो कर रही हैं। इट वाज आल्सो डिक्लेयर्ड दैट देयर इज द ग्रॉस inequality in the health status of the people between the development and developing countries, which is the politically, socially, economically unacceptable. Thus, they give the slogan HFA by the 2000, but they fail to achieve it. Now it is HFA behind the year of 2000 definition WHO. HFA is a defined as the attainment of level of the health will enable every individual to live socially and economically productive life. He can work productively and can participate actively in the social life and community which he live. इस माशरे के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, HFA क्या कहता है, उसकी डेफिनेशन क्या है कि उनको अपनी लाइफ के अंदर हेल्थ की मैक्सिमम अचीवमेंट अटेन करनी चाहिए हर इंडिविजुअल तक, चाहे वो सोशली है या इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ के अंदर। ठीक है, की ऑफ अचीव HFA। Primary Healthcare (PHC) global target for HF by the 2000. At least 5% of the GNP gross national product is spent on the health to provide basic health facilities within the radius of the 2 to 3 kilometer. Immunization of all children against the TB, diphtheria, and the persistent tetanus, poliomyelitis, and the measles, 9 EPI target diseases to reduce the infant mortality rate below 50 out of 1000 live birth, life expectancy more than 60 years, GNP per capita exceed the US 500. At least 90% of the newborn baby to have the birth weight 2.5 kilogram or the more. Global goals for the years 2000. Following 1990 World Summit for the Children, in this conference, children was given the much performance. In children under the 5 year, mother care is also included to reduce the under 5 death rate 70 out of the 1000 give birth, to reduce the 190 to reduce the 1990s maternal mortality rate of the half, 50% reduction in the 1990 rates of the malnutrition among the under the 5, to achieve the 90% of the immunization 90% achieve करना 100 the ones, and the eradications of the polios, 95% reduction in the measles में भी उसको 95% रिडक्शन देना। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास 50% reduction in the children death caused by the diarrheal diseases, one-third reduction in the children death from the acute respiratory infection, one-third reduction हुई है acute respiratory जो है वो इन्फेक्शन की वजह से। बेसिक एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एट लीस्ट 80% टू कंप्लीट द प्राइमरी एजुकेशन, क्लीन वाटर एंड द सेफ सैनिटाइजेशन फॉर ऑल कम्युनिटीज के लिए जो है क्लीन सेफ और जो है वो होनी चाहिए। Causes of failure of HFA by the 2000, constraint in the achieving HFA by the 2000, major causes में हमारे पास population explosion,
political environment, lack of community participation, lack of awareness, deficiencies in all allocation of the funds, maldistribution of the money allocation, इसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ द मीडिया एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन हेल्थ मैन पावर डेफिशिएंसीज डॉक्टर recurrent to both the rural areas lack of efficient and effective referral healthcare system lack of the appropriate technologies lack of the communication community participation of the coordination ये सारी चीजें हैं जो काजेज बनी हैं एच एफ ए के 2000 के कॉन्स्ट्रेन करने में उनको नाकाम करने में ठीक है इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास हेल्थ प्लानिंग साइकिल क्या होता है जी अच्छा जी हेल्थ प्राइम प्लानिंग ऑफ एनी कम्युनिटी स्लम्स इंक्लूड हैं इसके अंदर स्टेप्स क्या हैं कम्युनिटी को असेसमेंट करना इट इज डन बाय द असेसिंग द एक्साइटिंग हेल्थ सर्विसेज इंफॉर्मेशन ऑब्टेन अबाउट द अवेलेबल हेल्थ सर्विसेज एक्शन और यूटिलाइजेशन ऑफ द हेल्थ सर्विस finance of the services health and the demographic survey from the survey we can go about the population concern, age and sex distribution, occupation and the type of living, predictions of population. ये सारी चीजें हैं जो हमने इसको एक मैनेज तरीके से जो है हमने लेके चलना है preventing health problems and the boundaries of the areas of the population areas की boundaries बनाना उस areas की by identification of the cultural political social parameters we come to know about the हमें जानना चाहिए religious beliefs of the community उस community specific community के religious beliefs को हमें पता होना चाहिए उसके बाद दी कस्टम एंड दी ट्रेडिशंस के बारे में पता होना चाहिए पोलिटिकल सेटअप के बारे में पता होना चाहिए वुमेन वर्क असेस हमें पता होना चाहिए इन्वायरमेंटल कंडीशन हमें पता होनी चाहिए आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम आफ्टर द कम्युनिटी असेसमेंट आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम इन दैट एरिया जैसे कि हमारे पास सिटिंग प्रायोरिटीज में आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इट इज डिसाइडेड विच प्रॉब्लम इज टू बी सॉल्व फर्स्ट हमें सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है plan solution these problems plan is made according to the plan problems combination with the solution of the HC services make a plan of for the implementations monitor it make the routine observation health and recording the data evaluation the process of the inquiry into the performance of a program first five-star concept of the health facilitator care provider कम्युनिकेटर केयर प्रोवाइडर होना चाहिए कम्युनिकेटर उसको कम्युनिकेट करने के लिए होना चाहिए कम्युनिटी माइंडर होना चाहिए उसको माइंड को सेट करना जानता हो डिसीजन मेकर वो कम्युनिटी का डिसीजन मेकर ले सके मैनेजर ऑफ द लीडर और लीडर की लीडरशिप भी उसका होना चाहिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में होना चाहिए लेवल ऑफ द हेल्थ केयर प्राइमरी लेवल it is usually the point of the contact between the patient and the health system where the PHS and the essential healthcare of the BHU and the RHU बेसिक हेल्थ यूनिट एंड रूरल हेल्थ सिस्टम का हमें जो है वो पता होना चाहिए उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें सेकेंडरी ये प्राइमरी हेल्थ लेवल में आ जाता है सेकेंडरी में प्रोवाइड एट दी THQ DHQ जिसमें तहसील डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और इसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आ जाते हैं हमारे पास ना वो भी हमें पता होने चाहिए अच्छा इसके बाद जो है हमारे पास वो ये हो कि दे आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी लेवल टर्शियरी लेवल इट इज द प्रोवाइड इन द मेडिकल कॉलेजेस हॉस्पिटल एंड टीचिंग हॉस्पिटल super specialist healthcare they do not provide the highly specialized care but only they provide the highly specialized care also sustain the PHC and the part of the comprehensive healthcare level of the preventions and the healthcare में फर्स्ट लेवल जो हमारे पास है लेवल ऑफ द प्रिवेंशन हम सबसे पहले प्रिवेंट करेंगे इसमें प्रोटेक्शन है अर्ली डायग्नोज एंड द प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट है डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है लेवल ऑफ द हेल्थ केयर में सेकंड लेवल ऑफ हेल्थ केयर में प्राइमरी लेवल इज द बेसिक हेल्थ यूनिट एंड रूरल हेल्थ केयर सेकेंडरी लेवल THQ एंड DHQ में आ जाएगा टर्शियरी लेवल एट द टीचिंग हॉस्पिटल एंड उसमें आ जाएगा फर्स्ट लेवल ऑफ द केयर फैसिलिटेटिंग में हमारे पास जो आते हैं ना
अच्छा जी, फर्स्ट लेवल दे आर द एसेंशियली वेयर द फर्स्ट कांटेक्ट बिटवीन द पेशेंट एंड द प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर टेक इन द इंक्लूडिंग। सबसे पहले बेसिक हेल्थ यूनिट में होना चाहिए, फिर उसमें रूरल हेल्थ केयर यूनिट में होना चाहिए, फिर डिस्पेंसरीज होनी चाहिए, एमसीएच सेंटर्स होने चाहिए, सब हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए, ओपीडीज ऑफ द हॉस्पिटल होने चाहिए। ये एक हमने सिस्टम दिया है जो जिसके और उसके बाद फिर टीचिंग हॉस्पिटल में जाना चाहिए। आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर काफी है, अगला टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हाफिज।